ये 1 करोड़ 67 लाख रुपीस की घड़ी है और इसके बराबर वाली 1 करोड़ 5 लाख की घड़ी है। My name is Daniel Hock. I'm the head of brand heritage at Longines. This is the world's first hot quartz watch. स्वागत है आपका देसी इन फ्रांस के एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम लेके आए आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। आज के दिन हम मना रहे हैं यहाँ पे जोर्nées de patrimoine, जो कि फ्रांस में मनाया जाता है लगभग सितंबर के मंथ में। और ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, शायद जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते म्यूजियम्स, या जो लोग जानकारी चाहते हैं बहुत सारी विभिन्न कंपनीज़ या अंदर की प्रोसेसेस के बारे में, उसके लिए आप आज जा सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी म्यूजियम हुआ, कोई भी पार्लियामेंट हाउस हुआ, अगर आप उसमें अंदर से देखना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, हमने वॉच मेकिंग ब्रांड्स के एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंसेस के लिए सेलेक्ट किया था, जो कि बुशेर में है। ये पेरिस में आए हुए हैं हम, और क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको इनके इंटरनल वॉचेस और इनके जो भी आपकी न्यू लॉन्चेस हैं ये सब दिखाते हैं। तो एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है इंडस्ट्री पीपल से भी मिलने का, और थोड़ा सा इनकी वॉचेस वगैरह का जो विंटेज वॉचेस हैं उन पे अपना थोड़ा सा हाथ लगा के फील करने का कि भाई वॉचेस कैसी लगती हैं। और थोड़ा सा हम इंटरेस्टेड थे तो हमने सोचा क्यों ना आज इसको ट्राई किया जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप LVMH, अगर आप चाहते हैं आप कार्टियर या एयरबस, इन ब्रांड्स के भी अंदरूनी प्रोसेस आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड्स के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, कुछ ब्रांड्स के लिए शायद आपको पे भी करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप किसी भी कंपनी को अंदर से देखना चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट को अंदर से महसूस करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम आज देख पाएंगे जो कि शायद लॉन्च भी ना हुए हों, लेकिन ये अंदर जाके ही पता लगेगा। दोस्तों, अब हम अंदर चलेंगे और आज हम 3 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना चाहते हैं। हमारे पास रिजर्वेशन सिर्फ एक का ही है, तो स्नीक इन करने की कोशिश करेंगे कि 2 जो नई ब्रांड्स हैं यहाँ पे, जो टॉप लग्जरी ब्रांड्स हैं, उनकी भी हम कॉन्फ्रेंस ले पाएँ। थोड़ा सा जुगाड़ लगा के देखेंगे, बाकी आपको लेके चलते हैं और चलिए अंदर। Let's go. After attending the conference of Frédérique Constant, which was very brief by the way, we didn't get a lot of opportunity to shoot. We had this pleasure of attending the conference of Longines. Longines, if you don't know, is a professional watchmaking brand which is pioneered in chronométrage professionnel for sports events, instrument professionnel for pilots and navigators, and elegance intemporelle for timeless elegant watches. The history of Longines is closely intertwined with the pursuit of precision, chronometry in sports timing. Longines was timing the motorsports like Formula 1 Grand Prix of Monaco for more than 40 years and the 24 hours of Le Mans in 1965, because no other mechanisms were able to catch speed differences between competitors on the finishing line like them. Now let's talk about chronometry in aviation. It was crazy for us to know that the first wristwatch to indicate a second time zone was developed by this brand in 1925, and this watch was called Longines Zulu Time. And if you're wondering what's Zulu Time, it is actually the Coordinated Universal Time, the global time standard used in aviation, navigation and the military. As you can see on your screen right now, the hour hand at around 10 is the Zulu time hour hand, and the hour hand that you see around 6 is the local time hour hand. So this provided 2 time zones for aviation related purposes and to the pilots. We also got to know some great technologies which were used in these watches. For example, the flyback function. This mechanism enabled to reset and start a new time measurement with a single press of the push button. Another big testament to Longines' century-old prowess in aviation watches is that on 5th October 1931, 2 pilots completed the world's first non-stop trans-Pacific flight from Japan to the United States, and they used a Longines cockpit clock. At the time, it was the longest flight ever made over water. A great thing is that we got to see these watches in person. How cool is that? We also got to see some of their new collection like the Longines Zulu Time, which I loved by the way. Now finally coming towards brands' relations with high frequency watches. These are the watches whose frequency is above 28,800 vibrations per hour. Now the brand introduced the Ultra Chron in 1967 to house the newly developed Longines movement. This caliber was one of the first in the world to feature a 5 Hz or 36,000 vibration per hour movement. It meant 10 alterations per second. So highly exact. For reference, it went head to head with the likes of Grand Seiko's SLGH021 and Zenith's El Primero movement. All of these came at around 36,000 vibrations per hour or 5 Hz. Longines claimed that it was the most accurate movement on the market at that time. Now we had the pleasure of witnessing the recent iteration of this watch. This is pre-launch by the way. How cool is that in these fests like Patrimoine, you are able to even see these watches which are not even launched. This new watch boasts of 52 hours of power reserve and it's priced at around 3850 euros. How cool is that?
Now, if the watch geek in you is wondering that if this watch is operating at such a high frequency, isn't there some sort of reduced power reserve or deterioration of lubricant? Well, no, because Longines found the solution in this caliber called 431 with patented dry lubrication technology. It guarantees an amazing accuracy of plus minus 1 minute a month or 2 seconds a day. At the same time, it offers 52 hours of power reserve, which is not bad at all. We've also been fortunate enough to have a little discussion with him regarding watches after the end of this conference, which you'll see later in this video. तो दोस्तों कॉन्फ्रेंस लेते लेते और बीच में अब हमें लग गई है काफ़ी भूख, तो अब हम आए लंच के लिए ग्रीक रेस्टोरेंट खजालिया, जो कि आपका पेरिस में। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं आपको। आइए, ये इनका बेसिक मेन्यू है दोस्तों, जो भी आए आप देख लें। सैलेड वगैरह आपको अगर लेने हो, और इनके जो सिग्नेचर और ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं ये सारी यहीं पे हैं, आप इसी में से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों खाना हो चुका है तैयार। हमारे पास यहाँ 3 किस्म के सैंडविच यहाँ मौजूद है। आप देखेंगे पहला फालाफेल वाला फ्लेवर, दूसरा कोई और फ्लेवर है, इसका नाम मैं भूल गया, तीसरा फ्लेवर इसमें चीज़ है, इसमें ग्रीक पैटी टाइप डली हुई है। तो हमने 3-3 टुकड़े इसके खिला दिए ताकि हम टेस्ट कर सकें। वही इंडिया वाला सीन कि ये मोमोज भी लो तो 5-7 लोग ही सारे एक साथ खा सकें। तो अब हम शुरू करेंगे। वाह, सो गुड। तो दोस्तों पहली कॉन्फ्रेंस हमने ज्वाइन कर ली है, अब जा रहे हैं दूसरी कॉन्फ्रेंस की तरफ, जो कि एक हॉट हॉर्लोजरी की कॉन्फ्रेंस है। काफ़ी बढ़िया उसमें वॉचेस आने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, जल्दी जल्दी हम लेट हो रहे हैं, चलते हैं। And the second conference that we attended from Girard-Perregaux, we got to know that there are so many brands in the world which are very, very well known, like Rolex and all the other brands that you know. But this brand is so much above all those kind of brands. This brand is well known in hot luxury and has been bringing innovation to this sector since hundreds of years. We had the pleasure of experiencing some of their most well-known watches, such as the Laureato, and the opportunity to see these watches in person and have the feel is something that we could never forget, and I'm sure that you won't be able to feel through the video itself. You definitely have to give them a visit. And in the end, it was an honor to learn about their intricacies, to know about their rich heritage, and have a first-hand experience of their hot luxury watches, especially the first hot luxury quartz watch ever produced in this world. So here we are at the stand of Girard-Perregaux. I hope I didn't butcher the pronunciation. And this is the world's first hot quartz watch. Amazing! Look at this thing. I think it's 18 karat gold. Yeah, and look at the back side of this. I instantly fell in love with the way it looks. I'll just wear this for now to have a brief view. Look at this. Could you please briefly tell us about what is this about? What are these? So here you have there at 12 o'clock you have the calendar, so you have the dates. Right. You have the hour, minute, seconds. Right. And there you have the zodiac signs. Okay. And also the different colors display the seasons. Wow. And And you also have it's not displayed there, but you also have an indicator for the equinox. It's when the sun is on the top. You have the longest day of the year and the shortest day of the year. it's amazing how they achieved it. When was this watch made? In 1984. In 1984, this quartz watch, it could show you where the position of the sun is and the seasons, like you said. Amazing watch. How much for this one? Unsellable, I will say, because it's part of it's a piece from our museum, so you can imagine there is no value in fact. Look at this beauty. Such a beauty. तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग कहते होंगे कि भाई घड़ियाँ महंगी होती हैं, पर हमने आज पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतनी महंगी घड़ी अपनी आंखों से विटनेस करी। आप ये दिखाइए इसको, ये 1,67 लाख रुपीस की घड़ी है, और इसके बराबर वाली 1,05 लाख की घड़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि घड़ियों के सेगमेंट में भी बहुत महंगी घड़ियाँ आती हैं, और ये लग्जरी काउंट होती है। बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है, जो कि आज हमें यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आगे पता लग रहा है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और चलिए आगे ब्लॉग में आपको और कुछ दिखाता हूँ। तो इस लास्ट सेक्शन में और जो फाइनल कॉन्फ्रेंस थी इस पूरे इवेंट की, हमने जो किया यहाँ पे 2 महान महाशय हमारे को पूरी घड़ियों की हिस्ट्री बता रहे हैं, शुरुआत से लेकर अभी तक जो भी मेन सिग्निफिकेंट वॉचेस रही हैं उन सभी की हमने प्रेजेंटेशन देखी, और फाइनली एक क्विज भी अरेंज की गई थी। दोस्तों कॉलेज में कहूट करा करते थे वोट डालने के लिए, आज देखिए कॉन्फ्रेंस में भी कहूट कर रहे हैं। ये देखिए कहूट, लेट्स गो।
और टफ कंपटीशन चल रहा है, गलत ही गलत कर रहा है, गलत ही गलत हो रही है। ये देखिए मैं जीत रहा हूँ। So as you all know, today we are here for the Journées de patrimoine, and we have the pleasure of meeting Mr. Haq, and we are currently present in Paris, and we would like to do a little interview. Do you mind, sir, introducing yourself a little bit to our audience? Yes, thank you giving me the opportunity. My name is Daniel Haq. I'm the head of brand heritage at Longines. So I'm responsible for the museum, for the collection, for the documentation, for the research, and I do a lot of presentation all around the world. And there should be in early December a new book coming out with the title Longines Watches That Made History, presenting 50 iconic watches. And the concept is unique because we will show all the watches with their owner, their original owner, or in the context that they have been used. So you will learn about the watch of Albert Einstein, Wow. or of the famous aviator, female aviator Jackie Cochran. And you have all the stories, how they used the watches and what happened to them. For sure, that would be amazing. Even some of our viewers and ourselves, we would definitely love to read the book itself, and it would be a pleasure. We would like to ask you some quick questions about Longines. Would you like to share some facts which differentiates itself from the other brands? Yes, to put it in a nutshell, in a very short version, Yes. Longines has 3 pillars that are distinctive. We were doing for more than 100 years professional timekeeping. For more than 100 years, Longines has developed and produced timepieces, especially for aviation, for navigators, for pilots. And for more than 100 years, Longines is in the field of elegant ladies' watches with very small, tiny little movements. Right. And as someone who's early on in my career, maybe I won't be able to buy some of the expensive or new watches that Longines have to offer. But if I am to get inside the brand from maybe a second-hand market, would you recommend something for the watch enthusiast, maybe for not too expensive price tag? Yeah, first of all, Longines is one of the brands that didn't exaggerate with price increases. So our main segment still is the price bracket between about 1,000 to 5,000 euros. I mean, these are really prices that are fairly Doable. yes, Yes. for most of the people. You have also to imagine if you buy a Longines with a mechanical movement, it's something you can keep for 100 years. Wow. We have a specialized atelier heritage, a heritage workshop that is dedicated to service and repair every Longines watch, even if it's 100 years old, because we keep the spare components. So we are able to repair any mechanical Longines, even if it's 100 years old. Okay. So in terms of what you get, if you buy a Longines watch, I think it's fairly priced because it's not an object you will put away after 2 or 3 years. It is the main difference. Well, that was a great guide for all of our viewers, and for sure, I think we could definitely guide our search according to this. And just to have your final comment, we would like to ask, which one is your favorite watch? It could be any brand. You don't have to say Longines. One watch that is for me a favorite watch is this Ultra Chron dive watch, because it's from my personal collection. Wow. That I bought even before I started to work at Wow. Longines. And that's a watch that was always on my wrist now since many years. And yeah, it's so reliable and so accurate still. It's amazing. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. You're welcome. And I hope we'll see you in other conferences, maybe somewhere else. And I love the concept of museum. We would love to visit your museum. It's in Saint-Imier. Saint-Imier. It's 1 hour from Bern, the capital. Okay. Yes. Thank you again. We'll see you next time. तो दोस्तों, तीनों कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अब हम हो चुके हैं फ्री, और हमें मिले हैं छोटे से हैम्पर हमारी कॉन्फ्रेंस के बाद एज अ गिफ्ट। और दोस्तों, काफ़ी अच्छा आज का हमारा पूरा इवेंट रहा।
जोगने द पैट्रिमोन में एब्सोल्युटली रिकमेंड करूँगा, आप सभी को आना चाहिए। आप अंदर की इंट्रिकेसीज देख सकते हैं, आप प्री लॉन्च या प्री ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो अभी लॉन्च भी नहीं हो रखी। जैसा हमने आपको लॉन्जाइन में दिखाई, हमने ऐसी घड़ी देखी जो फ़िलहाल लॉन्च भी नहीं हो गई है। और साथ ही साथ हमारे को जैसे इस ब्रांड के बारे में बताएं, जिगार-पेरेगो, माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट द बेस्ट, लेकिन इन्होंने हमारे गिफ्ट वाउचर्स भी दिए और ब्रांड की ऐसी ऐसी घड़ी देखने मिली जो आज से लगभग 50 साल पहले आई हैं और जिन्होंने एक बार को रेवोल्यूशन ही लाया मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें आप तब देख पाएंगे जब आप ऐसे इवेंट ज्वाइन करें। और मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छा इवेंट है नेटवर्किंग करने के लिए। आप लोगों को ऐसे ऐसे लोगों से मिलने मिलता, मैं ऐसे लोगों को अब जानता हूँ जो स्विट्ज़रलैंड से यहाँ पे आए हैं, जिनका काम ही मैन्युफैक्चरर्स वगैरह में चलता है, और उनके साथ मिलना, उनके साथ एक्सपोजर होना अपने आप में ही एक काबिलियत तारीफ़ है। और अगले साल आएँ और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। और बाकी जो भी लिंक है जहाँ से बुकिंग वगैरह आप देख सकते हैं और जो भी पैट्रिमोन की ओपन प्लेसेस होती हैं वो आप उसमें जाके चेक कर लें। और उसी के साथ अब हम ये ब्लॉग को एंड करते हैं और अगली बार ज़रूर मिलेगा। बाय।